Hi guys, if you are watching this video, so maybe there is message for you. The first card is the Fool card and Three of Swords, Death, Five of Pentacles, Nine of Swords, Six of Cups, Ace of Pentacles, Ten of Pentacles, Ten of Swords, the Moon, Ten of Cups, and the Star card. So I think the energy I'm getting right now is that you are feeling really free now this time because now is that you do not overreact over the things. पहले क्या होता था कि आप जो है ओवर कर देते थे चीज़ों को, कुछ भी बात होती थी, कुछ भी चीज़ होती थी, एंड यू कनेक्ट इट विद योर सेल्फ एंड यू थिंक दैट नथिंग इज गोइंग टू हैपन, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, एंड दैट यू मेक यू स्टॉप टू डू योर थिंग्स. But now is happening that something is happening, but now you literally do not overreacting. It's just like that, that feeling you are literally that you are feeling that you are a new person. You are a new person right now. Now you are not overreacting over the things because you have done previously, and the good thing is about it, when the things previously happened, you were not able to see the deep down that why I am feeling it, why I am overreacting over the things. But now this time is that you are literally analyzing the things, you are deeply understanding the things, why I am reacting like that. And you are literally realize that this time you are literally realize that I it was like nothing. I was taking it as like overly. It was like nothing because I will be not able to change that. It was nothing. I'm not able to change anything. That why I am overreacting over the situation, because how many times that you try to solve it, people are not ready to hear you, listen to you, understand you. But now you are like not overreacting over the situation, over the people, because now you understand that you can't change the things, you can't not change the situation. So you understand that you don't need to explain yourself, you don't need to prove yourself, because previously you have tried to prove yourself, you tried to explain yourself that why are you feeling like that. But no one understand that. They were just misjudge you, misunderstand that happen. But this time is like you are becoming literally a very new person, that maybe you are feeling like that you have go through a lot of anxiety, lot of depression because of this, that why are not people understanding me, and the changing and the transformation that happened with you suddenly हुआ होगा कुछ ऐसा हफ्ते 10 दिन पहले, कुछ या तो कुछ कुछ बात हो गई होगी, कुछ भी सिचुएशन ऐसी हुई होगी दैट लिटरली चेंज यू एज ए पर्सन, कि उसके बाद जो आपका रिएक्शन निकल के आया चीज़ों के ऊपर, चीज़ें चेंज नहीं हुई है, लेकिन जो आपका रिएक्शन निकल के आया दैट वाज टोटली अपोजिट. दैट वाज लाइक अनएक्सपेक्टेड कि नहीं मैं भी ऐसे बिहेव कर सकता हूँ. मे भी शायद आपका एक नेचर ऐसा बन चुका था दैट आई एम नॉट एबल टू चेंजेस, कि मुझे लड़ना ही है, मुझे बोलना ही है, मुझे अपना एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज पीपल विल मिसजज मी, they will misunderstand me. But now you are like you don't care, you do not explain yourself, whatever people are saying you let them say that okay. But now you are not let them disturb your peace of mind. Yes, because you have already did that, and that situation has happened in your life, maybe suddenly that completely changes your perspective about the things. And यू डू नॉट, आप लोगों की बातों पर पहले बहुत परेशान हो जाते थे, नाउ लिटरली डोंट ओवर रिएक्ट. आपने वो प्रेशर अपने ऊपर से हटा दिया, अपने कंधों पे से वो चीज़ हटा दी है, एंड दैट यू कांट चेंज द थिंग्स. नाउ यू अंडरस्टैंड दैट यू कांट चेंज द थिंग्स, यू कैन ओनली वर्क ऑन योर सेल्फ, यू कैन ओनली चेंज योर सेल्फ, यू कैन ओनली चेंज द वे you react on the things. It's your responsibility that you will react or you will respond.
and in the deck last is there like three of wands. So maybe you get the experience, you get the knowledge, wisdom, that literally now you are feeling like in a full energy. See the full energy, that the person walking like very freely, emotional freely, that does not care what going to happen next time, because आप पहले ही बहुत चीज़ों को टेंशन ले चुके हो चीज़ों के बारे में, कि इस टाइम पे ये होना चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, लोग ऐसे होना चाहिए, चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, पर नथिंग डिडंट वर्क आउट लाइक यू वांटेड टू बी. तो so you like so I think that's a good thing, that you are becoming your new self. You are maybe starting your new something new hobby that make you excited to work on that. और अब आपके संग अच्छी बात ये हो रही है that you are not letting other person thought, their words, not letting that disturb your peace. you're literally learning to balance the things. आप सीख रही हो बैलेंस करना चीज़ों को. पहले आपके संग पता अब क्या हो रहा है, दैट यू आर लर्निंग. अब आप सीख रहे हो चीज़ों को कि मैं कैसे बैलेंस करूं. पहले कोई भी सिचुएशन वही रिपीट होती थी कई बार, लेकिन वो कहते हैं कि वो साइकिल इसलिए रिपीट होती तब तक आपको सीख नहीं जाते हो, आप कभी भी नहीं सीख पाते. पर नाउ यू आर लाइक, शायद अब आप सीख रहे हो चीज़ों से. अब आपने चीज़ों को डीप डाउन समझना शुरू कर दिया कि इनका मतलब क्या है. सी लेट्स सी सम मैसेजेस फॉर यू, सम चिट्स फॉर यू. ओके. See, able to see things that are hidden. ओके मैंने बस थोड़ी सी 2-4 चिट्ठी निकाली है बस मैंने. 11 न्यू बिगनिंग. ओ माई गॉड, कोई विश भी है तो आप मांग सकते हो. ओके. पांडा, इंट्रोवर्टेड, वाइस एंड केयरिंग, थॉटफुल, बैलेंस्ड एंड प्रॉब्लम सॉल्वर. ओ माई गॉड, नाउ यू आर बिकम ए प्रॉब्लम सॉल्वर पर्सन. See, I'm holding the phone right now, and that's why maybe you will think बार बार क्यों इधर उधर हो रहा है, क्योंकि मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है अपने हाथ में. ओके. टाइम मैनेजमेंट. ओके, यू आर लर्निंग टू मैनेज योर टाइम. दैट्स अ गुड थिंग. ओके. God has given you so many strength, unique quality, so find it and use it. Okay, so maybe you are starting to work on it. A good thing. I shine brightly wherever I go. Okay. No matter how unrealistic it seems, it's gonna happen. Okay, so if you're asking about something, तो it's gonna happen. Okay, so don't worry, चाहे बेशक वो कितना अनरियलिस्टिक लगे लोगों के लिए भी और आप लोगों के लिए भी. Okay, all of my problems have solution. Okay. Oh, sorry. ये हट गया इस पे से. I trust in my inner power, embrace my true self. Okay, so maybe you have started to embarrassing it. Now you're starting to not क्या था ना, अब आपने लोगों पर ध्यान कम देना शुरू कर दिया, अब अपने ऊपर ध्यान ज़्यादा देना शुरू कर दिया आपने. तो ये बहुत ही अच्छी बात है. कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप आप इस स्टेज पर हो, दैट यू आर नाउ understanding yourself and working on yourself. Your entire life will change when you realize that you have to sacrifice short-term freedom in order to earn long-term freedom. Sacrifice is the cost of entry. Delayed gratification is the key to the life you want. Okay. Delayed gratification is the key to the life you want. Okay,
सो आई होप आपको रेटिंग पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। ओके, टेक केयर। हर हर महादेव।